So welcome back to Insarkari. So in the next part, जो BOP overall हम broader topic cover कर रहे हैं, next part में हम fragilities around the balance of payment cover करेंगे. So India में we have talked about कि current account deficit में ज़्यादा रहता है rather than being in surplus, and capital account is more or less in we can say surplus, and current account maybe we have divided this into two sections. One was around the balance of trade, which जो एक मतलब major reason है why the current account is in deficit, and we have balance of invisibles, which is more or less always in surplus. So this we already discussed in detail. So twin deficit problem क्या होती है? एक balance of payment deficit, or we can say current account deficit, and second is fiscal deficit. So इसलिए हम उसको twin deficit problem बोलते हैं. Here it is mentioned also. So India में जो twin deficit problem है, which is because of the rising fiscal deficit and current account deficit, and दोनों we can say कि ज़्यादा volatile भी है. So from the latest moderation जो हमें देखने को मिल रहा है in the CAD, which is current account deficit, and fiscal deficit is also under control. So for the current financial year, the target for fiscal deficit is 5.9%. So India has reigned in this problem. Basically इसका मतलब ये है कि current account deficit और fiscal deficit इतना ज़्यादा बड़े साइज का नहीं है, या फिर जो deficit size है वो increase नहीं हो रहा है. That is rather reducing over a longer time period अगर हम बात करते हैं तो. So quarterly basis पे we are seeing moderation in both the deficits, and अगर हम 9-year period analyze करें, so 9 years में highest level था 4.4% का, and lowest was 0.2%. So even the fiscal deficit that is also reduced, highest था 9.2% पे financial year 2021 में, it has now come down to 6.4%, and I have already mentioned this financial year's fiscal deficit target. So Russia-Ukraine war की वजह से we can see कि it has helped India in overcoming the twin deficit problem. So ये बहुत important point है when we talk about Russia-Ukraine war की वजह से India को क्या help हुई है. So we can say कि twin deficit problem हमारी और अच्छे तरीके से handle हुई है. हम deficit का size जो है specifically CAD का जो size है उसको और अच्छे तरीके से regulate, control और कम कर पाए हैं. Now इसके पीछे अगर मैं detail में जाऊँ तो the main reason is कि India has imported crude oil at the discounted prices. So उसकी वजह से भी we can say कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा हम सेव कर पाए हैं. So this is the main reason. Then declining non-performing assets, ये भी एक we can say कि a step towards strengthening and bolstering the financial ecosystem in India. When we say कि Indian economy's resilience is getting much more strengthened, so this is one very important factor behind that the NPAs, non-performing assets of the banks is reducing. And banks का जो profit margin है at the same time, that is also increasing, and it is also increasing for the corporate sector. So twin deficit problem जो है India का, we are trying to convert that into twin balance sheet problem जो था. Now we are talking about twin fiscal advantage आप बोल सकते हो. So even the exchange rate is also stable, although we are seeing कि India का जो exchange rate है that is getting weakened, or we can say Indian rupee के ऊपर pressure increase हो रहा है और Indian rupee is depreciating. But मतलब उसमें इतनी ज़्यादा volatility नहीं है, that is a good thing. But Indian rupee, it is like अगर हम last के 4 to 5 years की बात करें तो Indian rupee has weakened vis-a-vis dollar. And even our capital account is getting more stabilized. So Indian economy has moved to twin balance sheet advantage now. So this is what I was talking about, moving from twin balance sheet problem to twin balance sheet advantage. So in the backdrop of recessionary fears, even जो credit rating agencies है like Standards and Poor's हो गया, so 2024 के लिए they predict कि overall world की अगर हम बात करें, global growth की बात करें, so we might expect recession in specifically the developed world, in United States, in Europe. But
despite all these fragile economic growth scenarios in the outside world, India would still remain a bright spot as far as the economic growth is concerned. So this is again a great opportunity for India when we talk about again the demographic dividend advantage that we enjoy. So in the backdrop of these recessionary fears across the world, it casts shadow on widening of the current account deficit. सो अगेन अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है तो इंडिया के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? सो जो हमारा ट्रेड सेक्टर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट डिमांड जो होगी वो बाहर की कंट्रीज में रिड्यूस हो जाएगी एंड उसकी वजह से वी कैन से कि एक्सपोर्ट्स कम हो सकते हैं। प्लस अगर इम्पोर्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट का साइज और इंक्रीज हो सकता है। तो दिस इज वन रिस्क फैक्टर व्हिच इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच इज द ग्लोबल ग्रोथ। सो इसीलिए करंट अकाउंट डेफिसिट स्टिल अभी हमारे लिए कंसर्न है। सो इवन आवर मॉनेटरी अथॉरिटीज दे आर रियली वेरी विजिलेंट अबाउट हाउ द कैड इज परफॉर्मिंग। So we go by the performance. So on a year-on-year basis, the current account deficit, it has increased up to 2%. So it was 1.2% in financial year 2022, and now it is increased to 2% in financial year 2023. So that is why basically we are monitoring and examining how the changes are happening. सो हेयर वी सी दैट करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्लाइन जो इंडिया में देखने को मिल रहा है, हम बात कर रहे थे कि लाइक मोर और लेस ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड इट इज मॉडरेटिंग। सो उसके पीछे क्या रीजन है? सो दैट इज बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस थोड़े रिड्यूस हो रहे, दे आर गेटिंग मोर स्टेबल। इवन अगेन आई हैव मेंशन्ड रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो इंडिया को एडवांटेज मिला ऑफ इम्पोर्टिंग द डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, so even their prices softening, and then हमारे services exports, ये बहुत important factor है as far as the trade and the exports is concerned. So इसकी वजह से services exports demand is increased and remittances have also increased, plus falling imports. So falling imports again इसको हम generalize नहीं कर सकते, but overall अगर हम collectively बात करें क्या factors है behind the reducing CAD, so these are different factors: reduction in the commodity prices, reduction in the crude oil prices, or we can this the strategic opportunity that India leveraged off because of the Russia-Ukraine war. Rise in the services exports is the third factor, and fourth is increase in remittances. So India even broke the world record as far as the remittances is concerned. Is India basically saw $100 billion worth of remittances inflow into the country. So the decline in the imports is much sharper than the decline in exports. सो दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट कि हमारे इम्पोर्ट्स जितनी क्वांटिटी हम इम्पोर्ट कर रहे थे कंपेयर टू हमारे एक दोनों चीज़ों में डिक्लाइन हुआ है, जितना हम इम्पोर्ट कर रहे थे और जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। बट जितना हम इम्पोर्ट कर रहे थे उस क्वांटिटी में ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू द डिक्लाइन इन द क्वांटिटी दैट वी वर एक्सपोर्टिंग। सो दिस इज अगेन इन फेवर ऑफ इंडिया एंड obviously that would be helping in reducing the CAD. And apart from this, when we see, so a lot of export from India in the manufacturing sector भी import dependent है। मतलब कि जो raw materials है that we require for the manufacturing sector, raw materials के case में हम import dependent है, but after adding value then we are exporting as well. So low import demand is indicative of low export demand also. अगर हम raw materials लेस अमाउंट में डिमांड कर रहे हैं, लेस अमाउंट में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। हम इसलिए रॉ मटेरियल्स कम इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो अल्टीमेट एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी कम ही है, तो इसलिए एक्चुअली जो हमें आउटपुट मैन्युफैक्चर करना है वो भी हम लेसर अमाउंट का करेंगे। Talking about the fiscal deficit performance, as we were talking about the twin deficit problem, अभी हमने cover किया है the current account deficit के around, how it has been performing, the reasons and what has been the trend overall. And now fiscal deficit की हम बात कर लेते हैं, the developments around this. So fiscal deficit, it increased to 9.2% in financial year 2021, and this was because of COVID-19. So government had spent enormously, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं fiscal policy की. So under the fiscal policy, government has spent both
higher amounts under revenue expenditure also and the capital expenditure. So like revenue expenditure ka, if I give one example, we saw the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, and that has been further continued also. So that is, we saw कि fiscal policy के under government ने again to support more demand, to support people's income, to support the healthcare sector, and to support the socio and economically backward classes. We saw government spending on health, on vaccination, on food subsidies, and on education as well. Then we talk about key financial 2021 and 23 में fiscal deficit management, that has also been done quite well. And again, I'm reiterating the fiscal deficit target for the current financial year is 5.9%. So gradually it would be reduced. And again, we have done some changes as far as the FRBM Act is concerned, because after COVID-19, the numbers or targets they under this act, they had to be revised. So this was a one shot, we can say amendment or change which was done. And अगर हम बात करते हैं टैक्स कलेक्शंस की, तो टैक्स कलेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट. So this will also enable the government to meet the fiscal deficit target of 5.9%. So even in tax collection, direct tax collection or indirect tax collection, indirect में we're talking about newspaper में we are seeing कि monthly GST collections, they have been averaging around 1 lakh crore rupees on monthly basis. So दोनों में हमें increase देखने को मिल रहा है. So that is also help in reducing fiscal deficit. And इसके अलावा we are seeing slow progress in disinvestment. So यहाँ से भी अगर there is more disinvestment, जो उसका impact होता है on fiscal deficit is positive. But we are seeing slow progress as far as this is concerned. Then fiscal deficit target 5.4%. Financial year 2026 के लिए target है, current financial year के लिए it is 5.9%. So जो अगेन हम बात कर रहे थे अभी तक ओवरऑल ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, सो उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट की हमने बात करी, हाउ दे हैव बीन परफॉर्मिंग एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड. Coming to forex reserves, so overall जो आज का हमारा टॉपिक है that is fragilities in the balance of payment. So दो एरिया हम डिस्कस कर चुके हैं. This is the third we can say subheading under this forex reserves की अगर हम fragility की बात करें, जो obviously हमारे BOP के ऊपर भी impact करता है. So हमारे अगर हम बात करें the growth of forex reserves of India, तो एक point of time पे around 1991 में जब हम structural reforms announce किए, $2 billion was the size of India's forex reserves, and at today it is at $600 billion. So here we are seeing key not only the developing countries, they are accumulating huge foreign currency reserves, but it is unique amongst the BRIC countries to do so despite consistently huge mercantile trade deficit होने के बाद भी. If we are seeing कि $600 billion का फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास है, या डेवलपिंग कंट्रीज में एक ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि दे आर हैविंग स्ट्रॉन्गर, और वी कैन से द साइज ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व्स इज इंक्रीजिंग. So that is we can say quite an achievement for them, and it is definitely helpful in strengthening their economic presence also as far as the global picture is concerned. And जब हम बात करते हैं कि you know giving more share, more participation, the global south होना चाहिए, so even this would be again supporting their participation in overall global trade and economic development. So this is there. Then if we go by the history of forex reserves, so India's trade was in balance during the first 2 decades following independence. So overall trend हम although बात कर चुके हैं through graphs also. So there was a sharp departure after that from the past, and the result of an inward looking developmental model. यहाँ हम बात कर सकते हैं import substitution की. So right through history, India ran big trade surpluses हमने enjoy करे with the rest of the world that financed huge gold inflows जो इंडिया में आए from the days of the Roman Empire. तो इंडिया huge amount of gold inflow तभी कर पाया because we had the trade surplus, मतलब हम export ज़्यादा कर रहे थे, उसके through हम forex reserves earn कर पाए, और उसकी वजह से we could buy huge amount of gold. So much of the gold which was plundered by the Spain from the New World, eventually it found its way to India. So this is basically history की हम बात कर रहे हैं. Then we'll be talking about military adventurers like Mahmud Ghaznavi, Nadir Shah,
who invaded India also, Ahmed Shah Abdali. So even they did raids and drain of wealth theory हम बात करते हैं even in the modern history during the colonial time period. So economic historian Raymond Goldsmith, they have estimated कि इंडिया का जो net annual commodity export था it was 2.1% during this time period, and it gradually declined. So we can say कि colonial time period से थोड़ी इंडिया की जो position थी economically forex reserves की अगर हम बात करें, so that got dilapidated. Then gold stocks, however, increased 1960s or 70s के decade में, although they went off the balance sheet because paid for by exports, they were not shown. So यहाँ basically हम accounting practice की बात कर रहे हैं, and because that was the reason was overvalued exchange rates. So इसकी वजह से they were not shown on the balance sheet. तो इसलिए लिखा है यहाँ पे off balance sheet जो gold हमने import किया during these 2 decades. And तो स्विस अकाउंट्स की हम बात करते हैं कि अगेन जो गोल्ड इम्पोर्ट हम कर रहे थे या जो सब्सटैंशियल कैपिटल फ्लाइट की अगर हम बात करें, इट वाज लॉक्ड अवे इन द ओवरसीज. तो यहाँ हम बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर सकते हैं या जो हम कैपिटल हेवेंस की बात करते हैं. एंड आज के टाइम में भी इंडिया में इट इज वन ऑफ द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड. एंड बट यहाँ पे कंसर्न ये है कि ऑलमोस्ट दैट इज entirely concentrated in the private hands. So this is one concern around this. And इसके around we have the scheme which is being run by the government or an instrument to diversify the gold holdings is these sovereign gold bonds. So we can invest in them and again उसको आप trade भी कर सकते हो, like not literally trade जैसे हम करते हैं equity market में, but यहाँ पे आपको market value मिलेगा. Again it is safer for investment and this is not in physical form. तो again gold अगर आप physical form में रखते हो तो then you have again security concerns around that also. And अगेन इसको हम इकोनॉमिक पर्पस के लिए एक्चुअली यूज कर सकते हैं. अगर आप फिजिकली गोल्ड अपने पास रखोगे तो आप उसको एक्चुअली यूज नहीं कर पाओगे. सो प्लस यू विल बी अर्निंग ऑन दिस एज वेल, इंटरेस्ट भी आप अर्न कर पाओगे. सो 1971 और 72 में जो ऑफिशियल ट्रेड था और करंट अकाउंट डेफिसिट से देवर अराउंड 1% तो जीडीपी रफली विच वाज इक्वल टू हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व से. तो इवन मतलब ये उस टाइम पे कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एक टाइप ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी बिटवीन द करंट अकाउंट डेफिसिट और जो हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे. बट आफ्टर दैट वी सॉ कि देयर वाज अगेन इकोनॉमिक क्राइसिस आल्सो अराउंड द ऑयल प्राइसेस एज वेल. सो 70s में ऑयल प्राइसेस दे शॉट अप एंड उसकी वजह से न्यू स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी, सो दिस इज अ कीवर्ड, न्यू स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी इंडिया के बीओपी अकाउंट में इट इमर्ज्ड which led to mounting of the external trade deficits for the first time in the history. So this happened for the first time during the 1970s. And balance of payment crisis 1991, we all know about this properly. And there was decline in remittances also this time during that particular time period. And India का जो invisible trade था, मतलब trade and services, that registered a deficit for the very first time. So usually India का जो balance of invisibles है that remains in surplus. So that is why we are actually doing going through this key for the first time. It was registered during 1990s decade. एंड एक्सटर्नल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो हिस्टोरिक डिसीजन था टू फ्लोट द रूपी, मतलब कि जो एक्सचेंज रेट वैल्यू होगी दैट वुड बी डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर द इंडियन रूपी. एंड outward orientation in response to external sector crisis constitute a major success story. Outward orientation मतलब कि we opened up the Indian economy for foreign trade, जो LPG reforms थे. So उससे पहले तक we had the inward looking policy, we had the import substitution policy. And जो foreign trade था that was now fully on the balance sheet. And it rose from 1 to 3/5 of the GDP within just 15 years. And India regained, diversified the foreign investments, capital inflows. India में हमें देखने को मिले foreign remittances में India broke the record of $100 billion worth of remittances in the world. So India is the first country to see such a big amount of remittances inflow. And financial sector, tax sector reforms किए गए. We pushed more repressed savings back into the formal sector. जो even bank में deposits थे, their size increased.
एंड हमारा जो सेविंग्स रेट था इट इंक्रीज फ्रॉम 9% ऑफ द जीडीपी टू 16% इन द फर्स्ट 30 years आफ्टर independence, and then it increased to 23% in the next 20 years, and then it sharply increased to 33% the last 10 years. So हम बोल देंगे कि overall trend has been consistently rising. Upward trend ही हमें देखने को मिला है in the savings rate of India. Portfolio investment although volatile होती है, it introduce new structural vulnerability. तो इस जो हम fragility की बात कर रहे हैं, तो FPI की वजह से fragility और ज़्यादा increase हुए, even in our exchange rate also. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारी इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटीज हैं, अगर नेट में पूरे ओवरऑल माइनस करके अगर हम पूरा बात करें तो मतलब नेट की यहाँ जो बात करें, लाइक यहाँ पे फॉरेन करेंसी रिजर्व जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उसको कितना, जो हमारी इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटीज हैं वो कितना कवर कर पाएंगी, तो जो हमारी बाकी लाइबिलिटीज बच गई, अनकवर्ड लाइबिलिटीज हैज रिड्यूस्ड शार्पली फ्रॉम 30% 1991 टू 10% 2005-06 में. So this is again a very very positive development. So I hope this point is clear. Then rapidly accumulating reserves जो है India's biggest insurance against the short-term external shocks such as जो hardening of oil prices. So basically we can deal with such types of short-term crisis. So India में again we have the strategic oil reserves also to deal with the short-term shocks specifically. So that's all in this part. In the next part जो हम cover करेंगे that would be fragility around the external debt of India. तो उसके बारे में बात करेंगे, India कितना external debt hold करता है, कितना हम उस पर rely करते हैं. So here if you have any doubt you can ask Kaushik. No, Mansi, you can continue. Okay. So thank you so much for joining us in this session, and stay tuned and you can subscribe to our channel Ansarkari.